बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस वी हैव टू डिस्कस. Entrepreneur uses a problem solving process, and that is a creative process to solve his problems, so the problems that it deals with. So there is certain steps which have to be taken while solving the problems creatively, or we can say that. So there we discussed the first point, that was the clarity. Clarity means to have a clarity of the problem, a proper understanding of the problem. हमने कल ही बात की थी कि हम जितने अच्छे तरीके से अपने प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, हमारे लिए ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारा सोल्यूशन जो आएगा वो बेटर आएगा. मतलब फिर से देयर इज अ prerequisite to have a proper understanding of the problem. After the clarity, the next is ideate. What is the ideate? Ideate means it involves generating and detailing ideas. Means ki if now you have, after the clarity, you understood properly what the problem is. Now the thing is to find out, after collecting all the information about the problems, there is a need to list the causes of that problem. What are the possible causes of the problem? And after having the all the possible causes, we find out, we make a detailed list of the problem, and then try to find out the feasible solution of the problem. फिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो अगेन यहाँ पे फिजिबल मतलब होता है दैट मस्ट बी विद इन आवर कंट्रोल, दैट वी कैन परफॉर्म. दे आर दी लॉट ऑफ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम बट दैट आर बियॉन्ड आवर रेंज, तो हम उसे बोलेंगे फिजिबल नहीं है. देन द कॉस्ट ऑफ द सॉल्यूशन, इफ व्हाट इज द कॉस्ट, कितनी कॉस्ट आएगी आपको उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के. उसको अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम. मैंने एक एग्जांपल इसमें लिया है कि फॉर एग्जांपल अ फार्म डज नॉट हैव अ क्लीन वाटर. एक फार्म ले लिया जिसमें कि पानी क्लीन नहीं है. अब क्या करेंगे? आई गेस दिस प्रॉब्लम दे मे हैव डिस्कस दिस एग्जांपल इन द प्रीवियस वन आल्सो, आई डोंट नो. मूविंग फॉरवर्ड, अगर पानी क्लीन नहीं है फॉर एग्जांपल, सो व्हाट द एंटरप्रेन्योर विल डू, द एंटरप्रेन्योर मस्ट लिस्ट द कॉजेज ऑफ द टॉक्सिक वाटर. पहला तो हम ये देखेंगे कि हमारे क्या क्या कॉज हो सकते हैं कि वाटर क्लीन नहीं है. वाटर क्लीन अगर फार्म में नहीं है तो इसका मतलब टॉक्सिक है. सो द अनक्लीन वाटर होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और देन वी विल एलिमिनेट ऑल दोज कॉजेज एज पॉसिबल. जो कॉजेज हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं उनको हम एलिमिनेट कर देंगे. The entrepreneur must move forward investigating solutions to bring the water back to the safe state. After removing the possible causes of the problem, then the entrepreneur will move towards the finding the solution. So ideate में हम क्या करते हैं? We generate the ideas. We actually generating the ideas and we finding out the solutions to the problem, what can be done to solve it. For say nearby livestock are polluting the water, the livestock should be isolated from the water source. तो उन्होंने बोला कि अब हम solution find out करेंगे. For example, after clarifying the problem was the water is toxic, and then we generate the ideas, make the list of the causes and try to eliminate that. For example, उन्होंने बोला कि उस फार्म लैंड के पास में लाइफ स्टॉक है, और लाइफ स्टॉक की वजह से भेड़ बकरियां हैं, लाइफ स्टॉक है, जिसकी वजह से पानी पॉल्यूट हो रहा है, जो वेस्ट है वो वहां पे बह के आ रहा है. तो हम क्या करेंगे? हम लाइफ स्टॉक को सेपरेट कर देंगे, हम ऐसी जगह पे रखेंगे लाइफ स्टॉक को जिससे कि पानी हमारा पॉल्यूट ना हो. देन डेवलप करना. आइडिलेट मतलब होता है डिटेलिंग ऑफ द आइडियाज ना. द आइडिलेट रेफर्स टू जनरेटिंग एंड डिटेलिंग आइडियाज. हम आइडियाज को जनरेट करते हैं. देन जनरेट करने के बाद हम क्या करेंगे? हम लिस्ट करेंगे, यानी कि वी विल डेवलप. नेक्स्ट स्टेप इज डेवलप. व्हाट विल डेवलप? द लिस्ट ऑफ आइडियाज जनरेटेड एंड टेस्ट ईच सॉल्यूशन फॉर फिजिबिलिटी. आइडिलेट में हमने सॉल्यूशंस की लिस्ट बना ली. व्हाट आर दी सॉल्यूशंस? पहले हमने क्लैरिटी किया, क्लैरिटी में वी फाइंड आउट व्हाट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम इज. देन हमने आइडिलेट में ही फाइंड आउट द वेरियस पॉसिबल सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस के बाद हम डेवलप करेंगे. विल डेवलप द लिस्ट ऑफ द आइडियाज और द सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिबिलिटी, whether it is possible to do that or not. इसमें हम कॉस्ट कंसिडरेशन करेंगे and we will also consider the obstacle which come in between, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन को अगर हमें इम्प्लीमेंट करना है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं
उन सारी चीज़ों को सजेस्ट करने के बाद हम सारे जितने भी हमारे ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस हैं, जितने भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन हैं, उन सबको आइडेंटिफाई करना, सारे सॉल्यूशंस को एसेस करना, देयर इज सम नॉइज, सारे सॉल्यूशंस को एसेस करना, दैट इज द डेवलप। देन इम्प्लीमेंट का मतलब है अब हमने सारे सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करके एसेस कर लिया, हमने ये देख लिया कि विच इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव एंड फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा है, कौन सा हमारे लिए फिजिबल है। जब सिलेक्शन के बाद जब आपने सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लिया, अब आप सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, अच्छा तो इम्प्लीमेंट में इम्प्लीमेंटेशन मतलब उसे लागू करना। द प्रॉब्लम ऑफ विच इज नाउ वी हैव फाइंड आउट द सॉल्यूशन, we have tested the solution, we have evaluated the solution, now we will implement it. There is a need to have a planned implementation, जो हमारा implementation हो वो भी एक proper plan वे में हो, ताकि जो that can be जो हमारा objective है वो पूरा achieve हो सके। अगर आप अनप्लान्ड एक्शन लेंगे तो मे बी यू मे स्किप समथिंग, सो देयर इज अ थॉरो प्रॉपरली प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट। प्लान इम्प्लीमेंटेशन के बाद evaluate, it is very important to evaluate your action, the action which you have done, na? Whether it is the problem has been solved or not, maybe the problem has not been fully solved, so you need to again recheck where you missed it. So then evaluation मतलब होता है जो आपने solution को implement किया है, whether your problem is solved or not, or whether it still persists. These are a few steps which is being taken under the creative problem solving. If you want to solve any problem creatively, so you need to go through all these steps. It is not, as I said, it is not only about an entrepreneur. Entrepreneur is a person who is having a clear vision, who is keen learner, सारी अच्छी qualities उसमें है. So this is the way he uses to solve the problem. But this is also a way where most of the people should use to solve the problem. If any problem arises with us, कोई भी प्रॉब्लम समस्या आती है तो सबसे पहले जरूरी स्टेप होता है कि हम उसकी क्लैरिटी कर लें, व्हाट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द रियल प्रॉब्लम इफ वी स्टार्ट एक्टिंग ऑन दैट, तो हमारा क्या होगा, हमारा जो एक्शन होगा ना वो टारगेटेड नहीं होगा, एक्शन जो है वो इधर उधर जाएगा ना। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज और आप अपनी तरफ से ही स्टेप्स ले रहे हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉपर अगर प्रॉब्लम प्रॉपर समझ में आ गई है तब आप डेवलप करोगे, यानी कि यू विल डेवलप द सॉल्यूशंस। अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आपने डेवलप कर लिए प्रॉब्लम्स, अब जरूरी है कि उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना। बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे सॉल्यूशन है उसमें से कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जो फिजिबल है, जो किया जा सकता है, that is within our control. There are various factors which is not in our control. तो obviously वो solution तो है। For example, अगर आपको क्लास कनेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम है, आपको 9 बजे क्लास में जुड़ने में प्रॉब्लम है, आपको यार 9 बजे तो मैं बिल्कुल क्लास नहीं कर सकता, मेरी तो कंप्यूटर से क्लास होती है, मैम 9 बजे क्लास लगाती हैं, सो दिस इज योर प्रॉब्लम। अब एक तो तरीका ये है कि आप बस बोलिए कि मैम क्यों क्लास लेती है, मैम को 9 बजे क्लास नहीं लेनी चाहिए, और या फिर आप बोलिए कि मैम को क्लास का टाइम चेंज कर देना चाहिए। Obviously, your teacher will not change the timing of the class because it is as per a timetable. So this is not the feasible solution. If you expect your teacher to change the timetable, and obviously changing of the timetable is not in your control, being a student, it is not in your control to change the timetable, and you keep on focusing on that. आप सारी मेहनत इसी पे कर रहे हो कि टीचर से आप ये continuously calling me and telling me, ma'am, please change the timetable, I am unable to connect, and पर्टिकुलरली जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी कि 9 o'clock पे मैथ्स की क्लास है और हम नहीं पहुंच पाते। अगेन हम बोलते थे कि बेटा दिस इज द टाइम टेबल एंड यू हैव टू डू दैट। सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग योर टीचर टू चेंज द टाइम टेबल, सो दैट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। हमें क्या करना है, अब हमें तो दिस इज नॉट द फिजिबल सॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड आउट सम सॉल्यूशन दैट इज फिजिबल, जो आप कर सकते हो, व्हाट इज इन योर हैंड्स। फिजिबल सॉल्यूशन मिलने के बाद जरूरी होता है उसे इम्प्लीमेंट करना, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस सॉल्यूशन को आपको अप्लाई करना जरूरी है। अप्लाई करने के बाद उसे इवैल्यूएट करना whether the problem being sorted out or it is still persisting. And now using the your creativity and solving the day-to-day problems of an entrepreneur.
These the common problems with which any entrepreneur deals with are that's business problems, like staffing, hiring, managing employees, handling legal compliance, funding, marketing, paying taxing. These are the common problems with which any entrepreneur comes to. He faces such problems. So, what can be done? What can be done to solve these problems? There are the various methods. So far, we have discussed the process of problem solving. Now we are going to discuss the methods of the problem solving. There are the many methods. There are the many methods. जिसे हम बोला जाते हैं कि entrepreneurial methodologies to solve the problems. So there are the many entrepreneurial methodologies by which the many entrepreneurs and the companies solve their problem. So what these problems are? फर्स्ट इज द क्राउड सोर्सिंग. क्राउड सोर्सिंग का मतलब क्या होता है? क्राउड सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि हम क्राउड से यानी कि हम लोगों से सोल्यूशन मांग रहे होते हैं. वी आर आस्किंग द सोल्यूशन फ्रॉम द पीपल. अब हम अगर लोगों से हम पूछेंगे कि व्हाट इज द सोल्यूशन, तो ऑब्वियसली दिस इज द दे आर द न्यू वन, दे आर द नॉन एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट द एक्सपर्ट्स. जनरल पब्लिक एक्सपर्ट तो नहीं है, पर जो उनके सजेशंस आएंगे, जो उनके आइडियाज आएंगे, उसको हम क्या करेंगे? वी कलेक्ट दैट आइडियाज एंड वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम विद द ओपिनियन ऑफ द क्राउड, विद द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा एंटरप्रेन्योर को किया हुआ, उसको कुछ खुद करना नहीं पड़ेगा. उसने खुद से कोई टीम नहीं अपॉइंट की, उसने कोई एक्सपर्ट नहीं अपॉइंट किया, उसने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो अपने कस्टमर से ही मांग लिया. तो इस तरह से क्या होगा? और द एंटरप्रेन्योर विल गेट द लार्ज पूल ऑफ द सजेशंस. बहुत सारे सजेशंस उसके पास आएंगे, बहुत सारे लोग ओपिनियन लेके आएंगे, तो ही कैन सेलेक्ट आउट ऑफ देम. इसको विजडम ऑफ क्राउड भी बोला जाता है, हर्ड मेंटालिटी भी बोला जाता है. दिस इज द मेथड ऑल्सो, दिस इज द मेथड to understand your customer. This is a method to have to learn the herd mentality, what customer is thinking. So you have a problem and you are encouraging your customers to give their views to solve that problem. So in this way you will get a large pool of the information. There will be many talented, many creative customers. Besides that, you will be able to understand the mentality of your customers, the way they think. मैंने बोला दिस क्राउड सोर्सिंग, अभी अब बताएंगे, आपको याद आ जाएगा, रिसेंटली हुआ था. इट इज एन एफर्ट, अ क्राउड सोर्स पोटैटो चिप्स. It is an effort to increase the sale among the millennials. PepsiCo turned a crowdsourcing to get a new flavor idea of the Lay's potato chips. याद होगा आपको, टीवी में ऐड आता था कि कौन सा चिप्स का फ्लेवर हमें चाहिए, और आपको जो भी चिप्स का लेस जो पोटैटो चिप्स आते हैं उनका एडवर्टीजमेंट्स आते थे न्यूज में, टीवी में. आई हैव सीन इट, जिसमें था कि डू अस अ फेवर कैंपेन स्टार्ट किया था लेज ने. डू अस अ फेवर कैंपेन में उन्होंने बोला था कि which flavor you want. So here the problem is कि obviously the changing demand, and बोले से millennials कौन है? हमारी मिलेनियम जनरेशन. आप लोग मिलेनियम जनरेशन हैं. उनकी मेंटालिटी को समझने के लिए, उनके बीच में सेल्स को बढ़ाने के लिए, हमें मालूम है कि हमारा जो नई जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन है, वही पोटैटो चिप्स के कस्टमर्स होते हैं. ऑब्वियसली पोटैटो चिप्स आर not consumed by the not preferred by the people of my age group. So these to encourage the youngsters, to encourage that, they have started the campaign, do us a favor. And around they have got the 14 million submissions. Around 14 million people have given their opinion that which flavor of the Lay's chips they want. And finally the winner was the cheesy garlic bread flavor. सो चीजी गार्लिक फ्लेवर जो था वो सबसे ज्यादा वोट मिले थे, और फाइनली कंपनी ने उसको लॉन्च किया. So this is the way of the crowdsourcing. नेक्स्ट द ब्रेनस्टॉर्मिंग. ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग में कई सारे एक्सपर्ट्स बैठ के किसी चीजों पे डिस्कशन करते हैं. I give my opinion, other people give their opinion, and they discuss that and try to find the solution of a problem. उसे कहा जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग. मंथन करना, मंथन करते हैं, करके सोचना, विचार करना,
एंड अलग अलग एक्सपर्ट्स जो होते हैं इसमें अपनी एक्सपीरियंस अपनी नॉलेज को एक्सचेंज करते हैं एंड बाय दिस वी ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम. So this is a very common practice and it is being conducted in higher level officials, बड़े departments में, companies में इस तरह से ही decisions लिए जाते हैं to find out the problem of any solution. An example दिया है कि it is preferred by the UNICEF. UNICEF जो हमारे चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, और यहाँ पे most of the problems are being done through the brainstorming process. स्टोरी बोर्डिंग. व्हाट इज स्टोरी बोर्डिंग? स्टोरी बोर्डिंग एक मेथड है एंड इट इज आइडिया इन अ स्टेप बाय स्टेप ग्राफिक फॉर्मेट. यानी कि प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना, दैट इज आल्सो वेरी वेरी कॉमन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. इसमें हम प्रॉब्लम को विजुअलाइज करते हैं और उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं. उसके स्टेप बाय स्टेप मेथड को भी रिप्रेजेंट विद सम डायग्राम, सम पिक्चर्स, and we try to come to the finally the solutions. And this is being it is kind of a visual है ना, sequencing, यानी कि visualize करना चाहिए किसी चीज को. अब why it is very useful? For example, I have certain opinion. If I try to tell my opinion to you in words, it is not being necessary that you understand the way I think. जो मैं सोच रही हूँ आप भी वो समझने लगे, कैसा पॉसिबल है? Many a times I am telling you something with some different things in my mind, and you understand the things differently. Why this happens? This happens due to the difference of the thought process. आपका सोचने का तरीका अलग है, मेरा सोचने का तरीका अलग है. अब इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज यहाँ पे हमें करना होता है. यहाँ पे हमें टीम में काम करना है, हमें मिलकर काम करना है, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ओपिनियन एक दूसरे का समझ नहीं पाएंगे. तो दिस इज द वे ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. कोई चीज हमने बना के दिखा दी तो वो जो मैं सोच रही थी उसको मैंने विजुअलाइज करके उसको रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी बेटर अंडरस्टूड बाय द अदर पर्सन. सो इन दिस वे वी visualize the sequencing and we try to come to the solution. आप देखते होंगे कि हम लोग टीवी में प्रोग्राम्स में देखते हैं कि सीआईडीज एंड पुलिस किस तरह से काम करती है. वो सीक्वेंसिंग ऑफ इवेंट्स का पिक्चराइजेशन करती है कि दिस इज द पर्सन, ये हुआ होगा, इसने इससे कांटेक्ट किया, इसने इससे कांटेक्ट किया, तो पूरा विजुअल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है. सिमिलरली डिफेंस में भी हम देखते हैं कि क्या होता है कि अगर वॉर की और कुछ प्लानिंग हो रही होती है तो उसको प्रॉपर मॉडल के फॉर्म में या ग्राफ के फॉर्म में या मैप के फॉर्म में बना के सामने रखा जाता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन. फिर बताया जाता है कि this is our this area, this is being surrounded by the enemies, they can enter from that area, they can from that area. तो इस तरीके से हम उसे विजुअलाइज करते हैं और फिर हम okay, so we try to understand that. So this if you look at this diagram you will better understand it. This is a storyboarding. ठीक है. Again I said this will help the team of the entrepreneurs or the members of the team to understand the represent their ideas visually, और उसको better तरीके से भी understand कर पाएंगे. Like here the steps are mentioned. This is A1, A2, A3, A4. ठीक है. Then A5 will be something. Then B1, B2, B3, B4. हम जो भी चीजें एक ऐप डाउनलोड कर बना रहा है वो something like this. So we represent it like this way to understand the problem properly, and then we solve the problem. Coming to the solution by this. Then team creativity आपका एक next method है. Team creativity क्या है कि here the team to create an unexpected solution. If you have again here the term is the creativity being used, so the team members, the team was working on that problem is expected to find out some unusual solution, some unexpected solution of the problem. अब इसमें क्या किया जाएगा, because it is the creativity solution, we are finding the solution of the problem through the creative methodology. So what we will be doing, we will following that problem solving process which we learned before, like clarify, ideate, develop, implement, and evaluate. And in this way, when we go with this creativity problem solving process,
We collaborate with the other members of the team, and we get the support of the team members, and with the help of the whole team member we come to a, obviously everyone has a different point of view towards the different solution, and when we get a, we'll get a different number of the views on that, and we can better understand anything, and we can come to a better solution. As I said, here the team creativity focuses on the importance of team in solving the problem. So here it is important that the team, the members must work on the basis of the team. They are like they are member of a team. Like one photo of the Facebook co-founder is mentioned, the most important thing for you as an entrepreneur trying to build something is you need to build a really good team. Fine. And he says that, and that's what I spend all my time on. So the entrepreneur has to build a lot of things. He has to build, obviously, an enterprise. He has to build a trust. He has to build the customers and everything. But he said, the co-founder of the Facebook said, the most important thing is to build a team. If you have a trustworthy, hardworking, and connected team, so obviously the success is in your hand. Means their key. I spend all of my time on it. Fine. So this was the creative problem solved. There are a few dimensions of entrepreneurship. There are a few areas of entrepreneurship, and this is the last topic of your syllabus. Means the unit one, which I am discussing. Entrepreneurship has the various dimensions, or we can say that different types of the entrepreneurship. Okay. फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप इज द इंट्राप्रेन्योरशिप. इंट्रा का मतलब ही होता है विद इन. इंट्रा मतलब किसी एक एरिया है उसके अंदर की बात की जा रही है, तभी हमने इंट्रा बोला. सो व्हाट इज द इंट्राप्रेन्योरशिप? इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? ये एक एंटरप्रेन्योर होता है. ही इज एन एम्बिशियस पर्सन, ही इज एन इनोवेटर हु इज एम्प्लॉयड समवेयर. So many organizations look for the persons who is having the creative ideas and who is having all the skills of entrepreneurship, and the companies know that hiring such a person will bring a lot of changes, a lot of positive changes in the company. So he's actually not doing anything by his own, but he's a creative innovator. He's an ambitious person. He has the capability of being a very good entrepreneur, and he's being hired by some organization. So entrepreneur emphasis on the innovation and creativity and transform idea into the commercial venture while operating within the environment. So he's the person who focuses on innovation. He focuses on creativity to transform the ideas into a commercial venture. By entrepreneurship is a business, so we have to transform our ideas into a commercial venture, and he operates within a corporate environment. Entrepreneur are within organization entrepreneur who nurture their creativity while following the goals of the organization. He's a creative person. He works creatively. He nurtures its creativity, but within an organization. He doesn't have his own organization. He works under some other organization. Why do we need the entrepreneurship? So this is the importance of entrepreneurs. Uh, if the company has an entrepreneur, why the companies need entrepreneurship? Entrepreneurship means again, this as I said right now, कि इसका मतलब होता है कि employing or hiring a creative person who is having the innovative ideas and who is has the ability to transform that innovative ideas into the for the commercial venture. So importance of entrepreneurship are, first is to penetrate the new markets. If the company has to enter into a new market, अगर आपको नए market में enter करना है, तो you have to bring some new ideas. Why the customers go for your product? तो तुम्हारे product के लिए क्यों जाएंगे? For this we need an innovative ideas. हमारी innovation theme होती है. अब एक नया concept है, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे schools में, बहुत सारे companies में innovative wing होती है. The innovative wing is a set of the people who are working on bringing the innovative ideas in the organization. So why these innovative ideas are important to penetrate into a new market? Whenever you have to enter into a new market,
You need to bring something different, something new to attract your customer. Next is the employee empowerment. देखिए, this is the way of method of employee empowerment. Here we are giving the responsibility or to the employee to bring the ideas, and company is going to implement on that there. So the employee will feel empowered, obviously, because the company is working on the basis of the ideas of its employees. So this is the way of empowering the employee also. So we can tell our employees to bring the ideas and evaluate that ideas. The best idea will be implemented. So in this way, the employee will feel more empowered. They will feel they are more worthy for getting any job and for working anywhere. It is not only important the salary and the remuneration you receive. Maybe at this age of the student life, you may be considering the salary is the most important motivation of any employee. But you know, when you are working in any company or anywhere, any institution, where you are giving your quality time. यानी 9 to 5 अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं, तो दिन का मोस्ट प्रोडक्टिव आवर्स जो है वो हम अपने इंस्टीट्यूशन को दे रहे होते हैं. सो देयर वी फील अ सेल्फ वर्थ. एवरीबडी नीड्स अ वर्थ. तो एम्प्लॉइज जहाँ पे फील करेगा इम्पोर्टेंट कि उसकी वर्थ है, तो वी विल बी मोर सेटिस्फाइड इन दोज वर्किंग एनवायरमेंट. So this is the way to make your employee more empowered. Optimum human resource utilization. All the organizations are having the human resource. Human resource have a lot of function to perform. But to get in maximum output, maximum utilization of that resource, this entrepreneurship should be encouraged, because here we are encouraging our human brains to come out with some different ideas, to think out of the box. Besides doing their regular job, they are doing something else. So we are optimizing, we are doing the optimum utilization of our human resource. Then economic stability is simple. When your enterprise will grow, when the company will grow, it will get the profit, it will pay more taxes, it will pay more salaries, and overall it will contribute to the economic growth of the country. Innovative growth. And now the growth जो आपकी growth होगी company की, this will be an innovative growth, because you are moving towards an innovative idea, you are working on an innovative ideas. So the growth will be there will be an innovative growth. Next is, here the elements for developing an entrepreneurial perspective in an organization. How we can develop this entrepreneurial perspective in any organization. Like we want to develop any entrepreneurial perspective. So what can be done in the organization? By developing the vision. The organization has to develop its own vision, what the company wants. ठीक है. ऐसे ही थोड़ा ना एक दिन हम क्लास में आए बोले आप लोगों से bring some innovative ideas. No, that will not work. There must be a vision. Why we are doing that? What we will do that? What the advantage will get out of that? यानी कि दूर का सोचना, विजनरी होना. विजनरी मतलब फ्यूचर के बारे में समझ रखना. देन एनकरेजिंग इनोवेशन. उसके साथ साथ जरूरी है कि हम इनोवेशन को एनकरेज करें. एनकरेज करने का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली सपोर्ट करना. ना सिर्फ आप, इफ यू आर encouraging people to bringing a new ideas, you should implement on that, you should work on that, so that the people will be encouraged, the team will be encouraged to work on the innovation. The company, the organization must emphasize on the innovation. Structuring of the entrepreneurial climate. There is a need for creating the entrepreneurial environment in the organization. Like the what is the entrepreneurship we have discussed the people. So उसके लिए हमें एक environment तैयार करना होगा, हमें एक structure तैयार करना होगा, where the people of such mindset can sit and think and work on that. Developing individual managers for the corporate entrepreneurship. हमारे पास we need to employ the managers who will look after such activities. And again, developing the venture teams, then there a need to develop the teams for working on it. So far, we have discussed the entrepreneurship and intrapreneurship. What is the difference between the entrepreneurship and the intrapreneurship?
The picture is quite hazy, but I'll read it for you. The first column is of the entrepreneurship, and second column is the entrepreneurship. And here we are discussing some of the difference between these two very closely related terms. First is the dependency, and the difference is on the basis of dependency. So first is entrepreneurship, जो ENTR वाला entrepreneurship. एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो अपना काम खुद शुरू करता है, अपना आइडिया खुद लेके आता है. लेकिन जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा होता है, तो वो डिपेंडेंट होता है अपने ओनर पे, वो विल बी डिपेंडेंट ऑन इट्स ओनर. रेजिंग ऑफ फंड्स की अगर हम बात करें तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होगा, क्योंकि वो एंटरप्राइज चला रहा है तो उसको अपने एंटरप्राइज चलाने के लिए फंड चाहिए होगा. लेकिन आपका जो इंट्राप्रेन्योर है, ही इज एन एम्प्लॉय, ही डजंट नीड टू रेज द फंड्स. रिस्क अगेन, जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें एंटरप्रेन्योर हमारा जो है वो बिजनेस चला रहा है, तो सारे रिस्क भी वही बियर करेगा. हमारा इंट्राप्रेन्योर जो है वो काम तो करेगा कि एंटरप्रेन्योर टाइप, लेकिन वो कोई भी रिस्क नहीं लेगा, बिकॉज ही इज द हायर्ड एम्प्लॉय वर्किंग ऑन सम स्पेसिफिक सैलरी और रेम्यूनरेशन. देन ऑपरेशन एंटरप्रेन्योरशिप जो करे, he operates outside, क्योंकि he is an owner, so he operates, he looks after all the working of the company, so he works outside because he is above all the company, he is the owner. And entrepreneur क्या होता है? He is an employee, so he operates within the organization, organization के अंदर रह के ये काम करता है. ओरिएंटेशन क्या होता है? Orientation, entrepreneur begins his business with a newly set up enterprise. भाई काम क्या होगा? What is the orientation? An entrepreneur starts his business and he starts a new setup. And what is the orientation of entrepreneur? Entrepreneur क्या करेगा? He first work in any organization. वो पहले दूसरे की कंपनी में काम करेगा, अपने इनोवेटिव आइडियाज लेके आएगा, उसको वहां पे इम्प्लीमेंट कराएगा, सक्सेस फेलियर के रेट्स देखेगा, और अगर वो सक्सेसफुल लगता है तो देन ही स्टार्ट्स हिज ओन वेंचर. Experience, entrepreneur establishes new business, so he does not possess any experience over the business. नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो भाई प्रायर तो बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं होगा उसके पास. भाई एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग हिज न्यू वेंचर. तो अगर हम न्यू वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास प्रायर बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं होगा. लेकिन जो हमारा इंटरप्रेन्योर है ये पहले किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुका है, पहले ये अपने इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करवा चुका है, so he has the experience of the prior experience of the business, then later on he starts his own venture. This was the difference between the entrepreneur and intrapreneur. So if there is any question you may ask.